This session is going to be on options Greeks demystified. We will learn here delta, theta, gamma, and vega, the four important Greeks, which are very, very critical if you are an aspiring options trader or if you want to understand how they interplay and impact the option premium and prices. Okay, my name is Amit Goyal. I am a CMT and a SEBI registered research analyst, which are very, very critical if you are a SEBI registered research analyst, and I shall be leading this session for all of you. Before we start, let me read out some of the important disclaimers that are required as per the mandate of SEBI. So this is me, Amit Goyal, and this is my SEBI registration details and the BSc enlistment number. And my SEBI mandate website is also listed here. You can go and check out all the disclaimers, your rule, your rights, and now some standard warnings. Investment in securities market subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. In this session of the next 1 hour, we will not be discussing about any stock tips. I will not be sharing any trade recommendations of any nature whatsoever. All we will be looking to do is understand the interplay between the elements of Greeks which impact your premium prices of options and how we can, use them to our advantage. See, उसको और कितने अच्छे से use कर सकते हैं, that is a secondary matter. The primary matter is that you need to understand what are the impacts, what are the things that impact a premium of options. And once you are aware of the things that impact that option premiums, then you become, you become one step closer to becoming a better options trader. तो अपना आज का जो उद्देश्य है वो बहुत सिंपल है कि ऑप्शंस के ग्रीक्स क्या होते हैं, मेन ग्रीक्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स में, एंड उनको वो किस तरह से हमारे प्रीमियम्स को इम्पैक्ट करते हैं. ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी कर रहे हैं तो उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बस इतना ही हम लोग बात करेंगे. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. So again, certain disclaimers and disclosures as per SEBI mandate. These things are required to be mentioned. Hence, I'm showing it to all of you. You can also visit the website as shown here and read through all the disclaimers and disclosures that are mandated by SEBI. Okay, without doing further ado, we will get into the topic on hand. All right. Okay, so हम लोग का आज का टॉपिक, the medium of instruction is going to be English. हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे ताकि wider audience को समझ में आवे. And we will try and keep it as interactive as possible. YouTube session is live. You can ask your questions over there, and I'll be happy to take them and answer them. Okay. First and foremost, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग basically ये समझते हैं कि key Greeks क्या होते हैं? What are the important Greeks which impact the option premiums? And then we will straight away, take an example of a trade, of an options trade, simulate it in various scenarios, and understand how each and every Greek interplays in it. Okay. Chalo. So, what are Greeks? Now, Greek letters are used to represent how sensitive financial derivatives prices are to changes in parameters. Okay. The main ones are delta, gamma, vega, theta, and rho. Okay. Now, what are they in their essence? Now, delta is all about direction, and the second way to interpret delta is about probability. However, we will first talk about direction. Now, delta represents the change in the premium given the change in the price of the underlying. इसको simple example से समझते हैं. Okay, let's take a practical example side by side so that we are able to understand and appreciate
these elements. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक जाता हूँ and I'll just open a random trade. Okay, I'll just simulate a trade. Okay, let's say we are buying a call option. Okay, now if we are buying a call option that is priced at 80 rupees, we will first and foremost go to the Greeks column. Now when you look at the Greeks, it says delta is 50. All right, so what does this tell you? इसका मतलब ये है कि for every 1 point movement in the underlying, which is Nifty in this case, the premium will change by 50 paise. Okay, it's that simple explanation. Okay, if let's say Nifty moves up by 100 points, since we have bought a call, the option premium, okay, बहुत simple mathematics ये होता है. Option premium current market price of call is equal to 80 rupees. Okay, the delta of this call is equal to 0.5. Now, therefore, if underlying moves up by 100 points, new call value is equal to 80 plus 100 into 0.5, which is 80 plus 50 is equal to 130 rupees. It is this simple understanding. ठीक है, डेल्टा क्या है? Delta will basically tell you कि how much will the premium change on account of directional movement of that option, of that underlying. ठीक है, and since calls are positively correlated, मतलब if the underlying moves up, call value goes up. If the underlying comes down, call value comes down. This tells you that calls are positively correlated. ठीक है, मतलब कॉल उसी तरफ जाता है जिस तरफ अंडरलाइन जाता है, एंड पुट्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, मतलब if the underlying goes down, the value of put goes up. If the underlying goes up, the value of puts goes down. ठीक है, तो calls are positively correlated, puts are negatively correlated. However, उनके जो डेल्टास होते हैं, उस डेल्टा के वैल्यू से हमारा अंडरलाइन का प्रीमियम चेंज होगा, हमारा ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा. ये एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया है. ठीक है, हम लोग इसको चाहे तो we can even try and let's see if we can simulate it. Let's say the current market value is 72 rupees and the Greek of this underlying, the Greek is 48. ठीक है ना, अभी इसको स्टेबल कर लेते हैं. 48 का डेल्टा है, 74 रुपीज का प्रीमियम है. अब यहाँ पर प्राइस चल रहा है 27,700. लेट्स मेक इट 800. ओके, तो 100 पॉइंट्स बढ़ गया. अब मेरा प्रीमियम कितना, सिम्युलेटेड प्रीमियम कितना दिखता है, राइट? मेरे को यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है 4,400. वी कैन सिंपली कैलकुलेट 4,419 डिवाइडेड बाय द लॉट साइज इज 75. तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना हो गया? 58 रुपीस बढ़ गया, करेक्ट? सो व्हाट वी आर सेइंग इज our delta has increased by about 50 rupees. Okay, so this is how your delta will have an impact on the option premium. Now, this is our first element. How will you use this in your trading? See, if you want to purchase an option, if you're an option buyer, you will want to have a higher delta when you buy an option. ठीक है, अभी देखो ऑप्शन चेन चलते हैं. लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन. Now, in the option chain, अगर आप देखें तो 25,750 का डेल्टा है 47 and its cost is 74 rupees.
ठीक है, let's make a note of this so that we understand the example better. So let's say the delta is 47. Okay, the premium is how much? Let's say 74 rupees. दूसरा एक और लेते हैं which is let's say 0.67 delta, ये वाला. Okay, ये वाला लेते हैं and ये वाला. So we will take 3 examples. So 67 delta is costing 131 rupees, nearly 2x, right? Now let's say 0.29 delta, this one is costing 37 rupees only. Okay, now this is ATM at the money, this is in the money, this is out of the money, correct? Now out of these three, as an option buyer, okay, what would you purchase? Which one will you purchase? Okay, now we can also calculate the risk in all three. Okay, how will you calculate the risk in all three? It is premium into lot size. So the first one is 5,500. Second one is 131 into 75, that is 9,800. And third one is 37 into 75, 2,700. So let's make a note of all three. Risk is 5,500, 9,800, let's say 2,700. So this is the calculation. Okay, so 5,500 is ATM, this is in the money, and this is out of the money. So layman interpretation is this is cheaper, correct? तो हम लोग क्या करेंगे? As a layman, somebody who is not aware of how the mechanics of options work, we will straight away say, okay, 2,750 सबसे सस्ता है, सबसे कम risk है, let us buy this. Correct? This is our first impression. जब मैं भी चालू किया था, I'm sure a lot of people who start options trading will look at it from this angle. Okay, हम लोग क्या करते हैं? We kind of either we are not aware of this thing. Okay, we are not aware of this angle. That is why what we do is we simply say, okay, this is the cheapest, let's buy this. Okay, let's buy this, which is this element 25,850. Okay, अब इसको simulate करके देखते हैं, right? I'm giving you a very practical example of how things work. ठीक, now क्या होएगा? Let's go to expiry day. एक्सपायरी डे कब है इसका? 4 तारीख 3:30 बजे. ओके, नाउ एक्सपायरी डे पे हमारा वैल्यू है, लेट्स से आवर स्ट्राइक प्राइस वाज 25,850. नाउ 25,850 is what we have bought, correct? Now on 25,850, what is the profit that we are looking to make? The profit that we are looking to make is about 2,000 rupees on this, correct? But if I had bought, sorry, this is 25,000. Okay, this is the one which we are looking to buy, right? 25,850. हाँ, now 25,850 हम लोगों ने कॉल खरीदा, क्यों? क्योंकि वो सस्ता था और उसका कॉस्ट सिर्फ 2,750 था. So we said, okay, let's buy the cheaper one. However, what will happen is, let's say on expiry day, the market comes and expires at 25,850. भाई आपने तो ये वाला कॉल खरीदा था ना, आपको तो प्रॉफिट होना चाहिए था. क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? You have lost the entire 2,750 rupees. Why? Because there was a lot of time element in this which got decayed. ठीक है? So, and इसका जो डेल्टा था, what was the delta for this? 27-28 का डेल्टा था. So the probability of profit was 27-28%. Now let's expire the market at 25,850 itself, but instead of buying this, we would have bought 25,650 का कॉल. अभी 25,650 का जो कॉल है,
ओके, लेट्स मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स ना, ये यहाँ पे नोट कर लेते, इसी टेबल पे नोट कर लेते. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एट एक्सपायरी. I like making note while I'm showing you a practical example because it is easily relatable. यहाँ पर we make a loss of 2750. Okay, at 25,850 level. This is the price at which it will expire. Now here we are making 5,500 rupees profit. पे loss बनाया. Now instead of this, let's say we had bought a ATM. यहाँ पर हम लोगों ने सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने 5,500 प्रॉफिट बनाया, which is the ITM, and here we are making 2,300 and 300. Let's say this is also profit. Okay, so now I will remove this box. Now friends, let me just select all of this so that it will become easier for us to understand. Okay, now we had bought an ATM, we had looked at an ITM and an OTM call. Yes, Amit, they are repeating this. तो हम लोगों ने 3 ऑप्शंस का हम लोगों ने सिम्युलेट किया. ठीक है, एक इन द मनी खरीदा, एक आउट ऑफ द मनी खरीदा और एक एट द मनी खरीदा, जिसके डेल्टास यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो वी आर ट्राइंग टू अप्रोच दिस. हम लोग इसको ऑप्शन ग्रीक के थ्रू समझना चाहते हैं. एक हम लोगों ने सबसे सस्ता वाला ऑप्शन खरीदा. ओके, यहाँ पे स्ट्राइक्स मेंशन कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दिस वाज 25,000 I think 650 था. This is 25,450. This is 25,850. है ना, these are the strike prices. Now हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 ऑप्शंस का सिमुलेट किया. तीनों में हमारा व्यू था कि भाई मार्केट बुलिश है, यहाँ से ऊपर जाएगा. सो हम लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस खरीदने की कोशिश की और देखा कि उसका रिजल्ट क्या होता है. राइट, नाउ हम लोगों ने सबसे पहले सबसे सस्ता वाला देखा, विच इज द चीपेस्ट ऑप्शन. This is the cheapest option. Correct, this is the cheapest option. Right, now the cheapest option was 2,750. Now on 2,750, okay, we make a loss when market expires at 25,850. है ना, उसके नीचे होगा तो भी लॉस है, उसकी काफी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट. नेक्स्ट, on the ATM option, जिसमें हमको 5,500 rupees कॉस्ट लगा, we make a profit of 2,350, 300 rupees. And in the money option, जो सबसे expensive था, okay, most expensive option, we actually end up making the highest profit. Now, why is this? Yes, Prakash, I'm coming to that. Whether the options delta will change or not is recorded or is given by another Greek, which is काम. ठीक है, वो उसके ऊपर आ रहा हूँ. अभी ये समझो कि भाई सबसे एक्सपेंसिव which was in the money, मगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसने दिया. देखो, मार्केट करंट मार्केट प्राइस यहाँ, ओके, टारगेट was 25,850. It reached here. So the journey that the market has undertaken is from the current market price till 25,850. Journey तो same है. In this journey, we have simulated 3 different types of options: ATM, ITM, OTM. ठीक है, cheapest, most expensive and the middle of the road. तो 3 टाइप के ऑप्शंस हम लोगों ने खरीद के देखे. अब उसमें क्या हुआ, the cheapest one, which was 25,850 का call,
costing 2,750 actually ended up giving us a loss. The ATM option, जो middle of the road था, gave us decent profit. So that is also okay. But the highest profit we got was in the most expensive looking option. Journey is from here till here. And the most expensive looking option has actually given us the highest profit. Now, why is this? ये क्यों ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1, इसका जो ऑप्शन प्रोबेबिलिटी डेल्टा है, ये ऑप्शन का डेल्टा है. ठीक है, हम लोगों ने देखा तो ऑप्शन के डेल्टा, वी हैव नोटेड इट डाउन. 47, 67, 29. सो 67% हमको बेनिफिट मिला. मतलब इफ लेट्स से द करंट मार्केट वाज, कितना है करंट मार्केट प्राइस? लेट्स से 25. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ रैंडम नंबर. लेट्स से 25,600. फ्रॉम 600 टू 850, 250 पॉइंट्स का जो जर्नी है मार्केट का, उसका 67% हमको बेनिफिट मिला because of the higher delta. So delta captures, delta tells you how much of the movement will be captured by that particular option का premium. तो अगर इसका 67 था, मतलब 70% उसका कैप्चर हो गया. यहाँ पे सिर्फ 30% कैप्चर हो. While it seems to be cheaper, ये actually ज्यादा risky होता है. So you will want to buy, if you are buying an option, you want to buy in the money options only. ठीक है, so if you are an options buyer, आपको option in the money वाला option खरीदने का सोचना चाहिए. Now I will explain little more, you will understand. ठीक है. Now ATM is a strike closest to the current market price. OTM is where the puts are less than current market price. Calls में it is greater than current market price. In the money options में उल्टा होता है. Puts are, जो puts current market price से नीचे होते हैं उनको in the money बोलते हैं, calls को ऊपर वाले बोलते हैं. ठीक है. Highest acceleration is between 40 and 60 deltas. ये सबसे ज्यादा आपको sweet spot होता है. Okay. Now I want you to simulate one more thing. ठीक है, ये हम लोगों ने डेल्टा के बारे में समझा. Second thing that I will want you to understand is gamma. ठीक है. Why I'm asking you to learn a little more about gamma is because now let's just take this example. And I'm trying to give you practical examples here. Now, what does gamma tell you? Gamma is the rate of change in delta given the movement in the underlying. आप इसको एक simple example से समझते हैं. ठीक है. There is this car, okay, going at 100 km/h. ठीक है, and it is going north direction. All right. ये जो है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा. मतलब किस स्पीड से जा रहा है. नाउ उसका जो हॉर्स पावर है कार का, okay, let's say there are two cars. Horsepower of, let's say you have a Ferrari and let's say you have a Maruti. किसका हॉर्स पावर ज्यादा होगा? Ferrari will have a higher horsepower, Maruti will have a lower horsepower. Correct? Let's say both are going at 100 kilometers, but if both the drivers put the accelerator faster, मतलब accelerator को दबाते हैं, acceleration किस में ज्यादा होगा? One with a higher horsepower. भाई जो स्ट्रॉन्गर मोर पावरफुल गाड़ी होगी वो फास्टर क्लिप से जाएगा, उसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी हायर. करेक्ट? सो दिस हॉर्स पावर इज नथिंग बट गामा. सो डेल्टा प्लस गामा in total give you direction in options.
ठीक है, let us try and understand this through a practical example. Let's take this example for the same. Let's say we are buying the 25,700 call of the 4th November, and then let's say we buy the 25th November का 25,700 और 25th 11th November का buy का. Okay, now just understand this here. Strike price is 25,700. ठीक है अमित भाई, प्रकाश जी, pay attention. Same strike price, same delta, बराबर 58. Are we clear? But look at gamma. Is it same? Is it same? The answer is no. Different gamma. Okay, which has a higher gamma? In options, how will you interpret this? जिसकी एक्सपायरी नजदीक होती है उसका गामा हायर होता है. For the same delta, जिसकी एक्सपायरी नजदीक होती है, the closer the expiry, your higher will be the gamma. मतलब closer the expiry, the more sensitive your deltas will be, your premiums will be. Okay, how does that look like on a simulated chart? Let me explain this to you. Let's see. What does this tell you? That if, let's say it is 59 delta, let's make a note here. Let's say my delta is 59. Okay, and my gamma is how much? 0.002. 0.002. Okay, let's keep it constant so that we understand the example. Now, all we need to do is just focus on these two columns and nothing else. ठीक है, सिर्फ ये दोनों देखते हैं. Let's just focus our attention on these two columns. And let's not be bothered about anything else. Okay, now let's say our delta, current delta was 59 and our gamma was 0.002. And let's say if the underlying moves by, let's say 10 points. So what we will do is 350 plus 10. Okay, so after this, it moves up by another 10%, 10 point. And this also moves by another 10. Okay, so for every 10 point movement, what will be the new delta? ठीक है ना, अभी क्योंकि if the market moves up, the deltas will change. क्योंकि वो the more in the money it goes, your deltas will keep going towards 1. Okay, तो अगर 59 delta है and gamma is 0.002, the more it moves towards your direction, the more it moves in your direction, your deltas will change.
By how much has it changed? Let's just copy this somewhere. Okay, यहाँ पे मैं इसको copy कर लेता हूँ. Okay. Now, in the other example, what have we seen? दूसरे वाले का था 0.0009 is the gamma, which is the next week वाला 0.0009. Okay, so I will invite your attention here on just these two columns, just these two rows. दोनों का starting delta was same, underlying price movement is the same, but दूसरे expiries के हैं. Because the expiries are different, the gamma values are different. Okay, this is the gamma value for near expiry. This is far expiry. ठीक है ना, छोटा gamma value for a further expiry. So what has happened is आपका डेल्टा देखो 59.2 हो गया 59.09, मतलब that minor change in deltas is greater. The change in delta is greater if your gamma values are higher. Okay, and gamma values as a thumb rule are higher for closer expiry. All right, so you must have heard of this gamma scalping strategies जो intraday में करते हैं. So what are these gamma scalping strategies? Gamma scalping strategies are nothing but trying to take advantage of this increased level of sensitivity of the premium closer to expiries. Okay, क्योंकि छोटा मूवमेंट में भी और बहुत बड़ा ऑप्शन प्रीमियम में स्पाइक आ सकता है. आप लोगों ने कई बार ये देखा है ना, क्लोजर टू एक्सपायरी वेरी स्मॉल मूवमेंट इन द अंडरलाइन causes the premiums to shoot up on either side very sharply. Okay, that sharp movement in underlying prices is essentially your gamma spike. तो ऑप्शन बायर जो करते हैं ना, गामा स्कैल्पर जो करते हैं ना, let's say on a 1 minute or a 3 minute chart, they look at compression zones, and if they find the underlying is in a compression zone and कोई breakout आने वाला है, then they buy those options. Okay, for that sharp quick in and quick out kind of trades. वो 1 minute 2 minute 3 minute का ट्रेड होता है, maybe not more than 5 minutes. ठीक है, in which you get very sharp movement. अंडरलाइन में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि निफ्टी हैज मूव्ड फ्रॉम 25700 टू लेट्स से 25900 और एनीथिंग. कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा अंडरलाइन में. मूवमेंट आएगा वो 25-30 पॉइंट का ही. ओके, बट बिकॉज वो एक्सपायरी के पास है और वो ऑप्शन प्रीमियम का गामा हाई है, तो उसकी सेंसिटिविटी हाई है और वो शार्प मूवमेंट के कारण अच्छा खासा आपको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा आपके प्रॉफिट्स पे, and you then quickly exit also. Gamma spikes happen and then they come back very sharply also. Which strike price is best? Correct, Prakash. So that sudden movement from 1 rupee, 5 rupee, 10 rupee to let's say 30, 40, 50 rupees is essentially gamma spikes. Okay, now which strike price is best for market uptrend? Amit ji, which strike price is best? Ideally आप ATM, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप ATM या उससे थोड़ा अंदर मतलब ITM ऑप्शन खरीदोगे. ठीक है, वो आपको ऑन द फेस ऑफ इट महंगा लगेगा, बट उसमें आपको प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, आपको पैसा बनाने की चांसेस ज्यादा रहेंगे. सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड यू बाय अराउंड द ATM और स्लाइटली इन द मनी. ठीक है, मतलब 50 डेल्टा, 55 डेल्टा, 60 डेल्टा, between 60 and 50 deltas you can consider buying. All right, now we have understood gamma, we have understood delta. Let's quickly, because this is a refresher sort of a course,
we will quickly understand the other elements, which is थीटा एंड वेगा ऑल्सो. ठीक है, नाउ इसी एग्जांपल को हम लोग आगे लेके चलते हैं. नाउ इफ यू नोटिस थीटा फॉर 4th expiry and if you notice theta for 11th expiry, these are the values. एक में 34 है और एक में 11 है. What does this tell you? What does theta tell you? Theta is nothing but the rate at which option premiums decay for the passage of time. मतलब अगर एक दिन खत्म होता है तो ये जो प्रीमियम है उसमें कितना डिप्रेशन, कितना डिक्रीज होएगा उसका वैल्यू. बाकी सब नॉर्मल, बाकी सब ceteris paribus, other things remaining equal. So now 4th November प्रीमियम which is at 101 rupees, उसमें 35 rupees का डिके आ जाएगा. Let's understand this. प्रीमियम कितना है? 101 rupees. यहाँ पर कितना है? 218. So theta decay is 35. So can I say 35 divided by 101? In percentage terms, it is 35%, right? 35%. And the next one is 11 rupees divided by 218. How much is this? 5%. Okay. Now, what does this tell you? What does this tell you? This tells you the closer the expiry is, the higher will be the percentage decay. The fact or the premium will decay faster as we approach expiry. थीटा का जो कर्व होता है, this is your theta curve. Okay. Theta curve is like this. This is expiry. Okay. And let's say this is weekly expiry. Let's say this is monthly expiry. ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी का जो कर्व होता है वो ऐसे होगा. ऑन एक्सपायरी इट बिकम्स 0. मंथली एक्सपायरी का जो है, द फर्दर आउट द एक्सपायरी इज, ओके, द डीके विल बी लाइक दिस, राइट. द रेट एट विच इट विल डीके, सेम स्ट्राइक, ठीक है, दोनों का सेम स्ट्राइक है, बट द रेट एट विच इट विल डीके, ठीक है, दिस विल बी फास्टर. बिकॉज ऑन दिस डे, जैसे एक्सपायरी डे 4 तारीख है, तो ऑन 4th नवंबर ये वाला प्रीमियम का थीटा विल बिकम 0. ये वाले प्रीमियम का अभी भी इसमें थीटा रहेगा. व्हाई? बिकॉज टाइम वैल्यू कंपोनेंट रहेगा. आर वी क्लियर? So the faster, the closer the expiry is, the faster will be your decay rate. Is theta clear? So basically, theta and gamma are two faces of the same coin. मतलब एक तरफ गामा सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है, थीटा सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है एज वी कम क्लोजर टू एक्सपायरी. तो उतना ही जल्दी डिके भी मिलता है और उतना ही जल्दी वो स्पाइक भी मारता है. मतलब गामा so closer to expiry, higher will be the sensitivity to theta and gamma. ठीक है, तो मतलब क्या होता है, वो जो 50 रुपीज, जो 1 रुपी का 50 रुपी स्पाइक होता है ना, दिस इज योर गामा स्पाइक. ओके, अगेन बिकॉज गामा एंड थीटा आर ट्विन सिस्टर्स बोल लीजिए, तो बिकॉज ऑफ दिस ये 50 रुपीज विल ऑल्सो कम बैक टू 1 रुपी क्विकली. अभी आप समझो साइकिल कैसे चलता है.
हम लोगों ने अभी तक क्या नोट किया भाई, स्पाइक आता है मतलब 1 रुपए का 50 रुपए जाता है। वी अंडरस्टूड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ गामा स्पाइक। फिर मार्केट में जब वो गामा स्पाइक आ गया, वो 50 रुपीज का आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया है, इट कम्स बैक एंड सेटल्स डाउन। यस, दैट सेटलिंग डाउन इज नथिंग बट थीटा। ओके, सो गामा स्कैल्पर के लिए सबसे फायदेमंद है बिफोर द स्पाइक दे एंटर द ट्रेड, एंड थीटा सेलर्स के लिए सबसे अच्छा मौका होता है स्पाइक के बाद सेल करना। अंडरस्टूड? सो इफ द मार्केट इज मूविंग लाइक दिस and there is a breakout, this is where a gamma scalper will come. Okay, market will spike, theta sellers, this is where they will enter, prices will come down. So gamma scalping will start here, they will exit here, theta sellers will come here, they will exit here. मतलब simple language में option buying will happen here, option selling will happen. इतना समझा? Is this clear? सो अगर आप ऑप्शंस इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आप ऑप्शन बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ना इंट्राडे के चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा कि कोई कंप्रेशन, स्पेशली नियर एक्सपायरी, जैसे कल एक्सपायरी है और आज और कल के बीच में ना सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है। यू कैन ऑल सी इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, ठीक है, 0.002%, 0.002 इज अ गामा स्पाइक रेट। तो इफ द अंडरलाइंग इज कंप्रेसिंग, मतलब वो 3 मिनट के चार्ट पे अगर कंप्रेशन जोन पे है, तो आप उस जोन को मार्क करके रखो। जैसे ही वो जोन को तोड़ता हुआ दिखेगा, प्योरली एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, once it looks like it is breaking that zone, giving a breakout with strong volumes, तो आपको मालूम है कि भैया यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, राइट? maybe if the compression zone is of let's say 20-30 points, you are expecting a 30-40 point का spike. So when you get that spike, when you get that breakout, immediately you will look to enter as an option buyer. That's the best time to buy the option intraday. And जैसे वो स्पाइक आ गया, ठीक है, आप अपना टारगेट सेट कर लो अगर 30 पॉइंट्स का। सो because I cannot give live trades, I'm giving a simulation. Let's say there is a compression zone like this, nifty or anything is moving in a tight range of, let's say example, 50 points. Okay, tight range of 50 points. Then this is your volume bar. Okay, you get a breakout. And you get a strong volume candle. Okay, volume candle is up, you get a breakout of this zone. You know that this is the range of 50 points. आपको कम से कम 50 पॉइंट का एक मूवमेंट आ सकता है, या लेट्स से 2:1 का आ सकता है, लेट्स से एक 100 पॉइंट का रेंज आ सकता है, राइट? यू आर एक्सपेक्टिंग अ 100 पॉइंट जंप. Hypothetical situation, not necessarily nifty or anything. I'm just giving you an example, right? You will enter, you will buy options here. Which one will you buy? Call options, correct? आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बाय करोगे when this candle closes, अच्छा वॉल्यूम दिखा आपको, आपने यहाँ पे बाय किया बिकॉज कंप्रेशन जोन से ब्रेकआउट हो रहा है, स्प्रिंग कॉइल हो रहा है और फिर फटेगा। तो मार्केट जैसे फटता हुआ दिखे, आपने ऑप्शन बाय किया, ये मूवमेंट आया तो आपने यहाँ पे अपना टारगेट भी सेट कर दिया. Okay, you get your target and book your profits because these gamma scalps in option premiums ऐसे ऐसे जाते हैं, सडन स्पाइक आता है फिर नीचे चला जाता है. yes or no? प्रीमियम्स इस तरह से ही दिखते हैं. You get a very sudden spike and then everything cools down. So you want to capture this as per gamma scalp, and you will do it only when there is a clean breakout. Are we clear?
So Amit has a very valid point. Singh Saab, you have a very valid point. Why do option sellers make money and option buyers tend to lose money? ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं? फर्स्ट मिस्टेक, सस्ता ऑप्शन खरीदते हैं। करेक्ट, कि भाई वो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, 5,000 का नहीं, 10,000 का नहीं, मैं 2,500 का ऑप्शन खरीदूंगा। बट आप ये भूल जाते हो कि भाई 2,500 का ऑप्शन जो आप खरीद रहे हो, इन आवर एग्जाम्पल के रिलेशन में बात कर रहा हूँ, उसका डेल्टा कम था, उसका डेल्टा 27% था। तो मतलब क्या है, अंडरलाइन का जो प्राइस मूवमेंट है उसमें सिर्फ अगर 100 रुपये मूव करता है, आपको सिर्फ 30 रुपये का बेनिफिट होएगा। ठीक है, और हम लोगों ने देखा है विद दैट एग्जांपल इटसेल्फ, वी हैव सिमुलेटेड इट, कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है बट हमको सिर्फ 30% का उसका फायदा होता है। अगर हम लोगों ने हायर डेल्टा का खरीदा ऑप्शन, तो हमको उससे ज्यादा मात्रा की बेनिफिट मिल सकती है, वी गेट अ हायर शेयर इन दैट अंडरलाइंग मूव। ठीक है, सो इफ यू आर एन ऑप्शंस बायर, यू वुड वांट टू बाय मोर देन 50% ऑफ दैट मूव, कि कम से कम मेरे को 50% मूव चाहिए, 50, 60, 65 इस तरह का पार्टिसिपेशन चाहिए। राइट, तो वो एक गलती होती है, बिकॉज higher the delta, more expensive the option when you are buying. Number one. Second, option buying जब करते हैं हम लोग उसमें, how many of you do कितने लोगों ने ये किया है? Let me put this example. You buy a call at let's say 150. ठीक है, underlying is at say 15,000. ठीक है, now after 2 days, after 1 week, ये call is at let's say 125, underlying at 15,000. Okay, what do? You average it, or you simply buy more. Okay, you do nothing. This is option A, this is option B. How many of you would choose option A? How many of you would choose option B? मतलब क्या है, आपका एक कॉल है जो आपने 150 में खरीदा, 15,000 का अंडरलाइन था, एक हफ्ते के बाद भी मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, आपका कॉल में घट के वो 125 रुपया का हो गया। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ थीटा डिके। राइट, अभी आपके पास दो ऑप्शन, मैं सिनारियो देता हूँ, आप क्या करते हो? भाई अभी मैं क्या करता हूँ, एक 150 का खरीदा था, एक और ऑप्शन खरीद लेता हूँ 125 का, तो मेरा एवरेज कम हो जाएगा, तो एनी स्मॉलर मूवमेंट आई विल बी एट ब्रेक इवन। हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? ऑप्शन ए। और दूसरा वाला क्या करता है बंदा? वो कुछ नहीं करता है, भाई नहीं मैंने 150 का खरीदा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सो व्हेन यू डू दिस ऑप्शन ए, दिस इज योर novice mistake. पीपल, अभी किसी ने पूछा ना, सिंह साहब ने पूछा, व्हाई डू ऑप्शन बायर्स मेक लॉसेस? अनइन्फॉर्म्ड ऑप्शन बायर विल कंटिन्यू टू मेक लॉस जब तक उसको डेल्टा गामा का, जब तक उसको ग्रीक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि कैलकुलेशन का अलग ही एक तरीका होता है, डेरिवेटिव्स में इंटीग्रेशन वगैरह में जाके कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलस वगैरह होता है, वो सब नहीं करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका इम्पैक्ट समझ रहे हैं, डेल्टा का क्या इम्पैक्ट है। भाई 29 डेल्टा या 20 का डेल्टा खरीदूं, 25 का डेल्टा खरीदूं कि 50 का डेल्टा खरीदूं, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज इट्स इंटरप्रिटेशन, पहला वो समझा। ठीक है, सस्ता ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, हमको अप्रोप्रिएट करेक्ट डेल्टा वैल्यू खरीदनी होती है, नंबर वन। वो मिस्टेक हम लोग हमेशा करते हैं, सस्ते ऑप्शन के पीछे भागते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शंस को एवरेज करते हैं। See, options में, this is the third element that we are going to discuss now, or rather we are in the process of discussing, is the theta. हम लोगों ने डेल्टा कर लिया, हम लोगों ने गामा कर लिया, अभी हम लोग थीटा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा में क्या होता है, थीटा इज व्हाट, प्रीमियम जो है
वो डिके होएगा, वो प्रीमियम घटता जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, डेल्टा समझ गए, गामा समझ गए। एट द गामा इज नथिंग बट द रेट एट विच डेल्टा चेंजेस। ठीक है, और थीटा इज नथिंग बट हर दिन वो प्रीमियम कितना घटेगा। तो ये जो है 25 रुपया जो है ना, एक हफ्ते में घट गया, राइट। थीटा विल कंटिन्यू टू डिके एज वी अप्रोच एक्सपायरी। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आते जाएंगे, थीटा कंटिन्यू करता है डिके होना, एंड थीटा अल्टीमेटली प्रीमियम को जीरो कर देता है। ठीक है, जो टाइम वैल्यू कंपोनेंट। अब अगर मैंने इसको एवरेज कर लिया, तो मैंने एवरेज क्या किया, मैंने गैस को एवरेज किया, मैंने थीटा को एवरेज किया, जो एनीवेज घटने वाला है, तो उसमें हमको फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जितना नजदीक, अभी सेकेंड वीक में ये शायद 90 रुपया या 80 रुपया हो जाए। वाई? बिकॉज रेट ऑफ डीके एज वी कम अप, एज वी अप्रोच एक्सपायरी, ये डीके है, ये रेट ऑफ डीके मतलब थीटा घटने का। दिस इज लाइक द प्रीमियम, ये प्रीमियम है आपका। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग कितने पे हैं प्रीमियम, लेट्स से 125, यहाँ पर थे हम लोग 150, ये जीरो, ये एक्सपायरी है। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे हम लोग नजदीक आएंगे, 120, 100, 80, 50, जीरो, इस तरह से होता जाएगा, फास्टर रेट एट विच वी विल डिके। ठीक है, तो एवरेजिंग ऑप्शन बाइंग में नहीं करते। कैश मार्केट में आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि उसमें डीके एलिमेंट नहीं होता। ऑप्शन बाइंग में डीके एलिमेंट होता है, थीटा का एलिमेंट होता है, इसके लिए आप ऑप्शन में बाइंग का एवरेजिंग नहीं करना। आर वी क्लियर? तो पीपल मेक दीज मिस्टेक्स, इसके कारण ही ऑप्शन बायर्स लॉस में होते हैं। उनको डेल्टा के बारे में ज्ञान नहीं होता, गामा के बारे में ज्ञान नहीं होता, थीटा के बारे में ज्ञान नहीं होता। आर वी क्लियर? क्लियर? चलो, नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल एलिमेंट विच इज वेगा। वेगा क्या है? वेगा इज द सेंसिटिविटी प्रीमियम जो है, वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, मार्केट में अगर ज्यादा उछाल होने लगी, ज्यादा ऊपर नीचे होने लगा, तो मार्केट में घबराहट होती है। जब मार्केट में घबराहट होती है, अनसर्टेनिटी होती है ना, तो मार्केट का अंडरलाइन जो ना वोलेटाइल ज्यादा होता है। तो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ अगेन। See, it is more easier to understand things when you do a practical example rather than theoretical. That's why I'm taking this practical example. Now, आज लेट्स से 3rd of November है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 4th November की एक एक्सपायरी है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 11th November। लेट्स से 11th November। ओके, नाउ आई विल आस्क यू दिस प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल एक्सपायर। मार्केट यहां से, अभी कितना है मार्केट, 25,700। ठीक है ना, अभी मैं बोलता हूँ 4th November को 26,200, 500 पॉइंट मार्केट जाएगा, या 11th November को चांसेस है। ठीक है, और इन सिंपल लैंग्वेज प्लस और माइनस 500 पॉइंट मूवमेंट, प्लस और माइनस 500 पॉइंट मूवमेंट। तो विच डू यू थिंक इक्विटी ट्रेडर, इक्विटी इन्वेस्टर विल ऑलवेज बी मोर प्रॉफिटेबल? ऑप्शन ट्रेडर्स, अगर आपके पास समझ है ऑप्शंस की किस तरह से करते हैं, तो इक्विटी का एक मेन पोर्टफोलियो बनाएं और उसके ऊपर ऑप्शंस का एक लेयर चढ़ाएं, एक एक स्ट्रैटेजी की लेयर चढ़ाएं, तो बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। आप सोचो, सिर्फ ऑप्शन बाइंग से या ऑप्शन सेलिंग से आप बहुत सारा पैसा, धन कमा सकते हो? बहुत डिफिकल्ट है वो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू नीड टू बी वेरी गुड एट इट, और ये सब चीजें बहुत अच्छे से जानना चाहिए आपको। और सॉफ्टवेयर बने हैं जिसके थ्रू ये सब किया जा सकता है। प्योर प्योर रिटेल ट्रेडर चार्ट देके या ऑप्शन चेन देके करना
बहुत मुश्किल है। इसके लिए समझना जरूरी है आपको कि ऑप्शंस को किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर एक लेयर की तरह चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल इनकम मिले, आपको आपको थोड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट मिल सकता है। नाउ कमिंग बैक टू, ये एक क्वेश्चन है, आज 3 नवंबर है। एक दिन में 500 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है या एक हफ्ते में 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है? ऑब्वियस आंसर क्या होगा? ऑब्वियस आंसर यही होगा कि सर अमित यार, एक हफ्ते में 500 पॉइंट का मूवमेंट प्लस ऊपर नीचे मार्केट मूव कर सकता है हफ्ते भर में। एक दिन में 500 पॉइंट मूव करना थोड़ा मुश्किल है। करेक्ट? दैट इज द सिंपल आंसर। जितना मैं, और मैं यहां पे बोलता हूं, लेट्स से दिसंबर एंड, ओके, दिसंबर एंड, तीसरा सिनारियो, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट मूविंग प्लस और माइनस 1000 प्लस 1000 पॉइंट, 1000। अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी पूछूं कि 1000 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में आ सकता है, एक हफ्ते में आ सकता है, या 2 महीने में आ सकता है, आपका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? हाँ, 2 महीने में चांसेस है कि मार्केट इतना मूवमेंट दे सकेगा, एक दिन में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चांस। करेक्ट? ये एक सिंपल इंटरप्रिटेशन है। यही इंटरप्रिटेशन को हम लोग मार्केट एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, विच इज कैप्चर्ड बाय वेगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, ठीक है, वेगा की मतलब मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है ना, जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास आते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं होती है। वो जो लास्ट लास्ट में स्पाइक आता है ना ऑप्शन प्रीमियम में, दैट इज गामा स्पाइक। बट मार्केट में एक दिन में 500 पॉइंट का उछाल या गिराव नहीं आ सकता, ठीक है, वो आना बहुत कम चांसेस होते हैं। तो उसको, इसके लिए आप अगर देखो वेगा की सेंसिटिविटी, इधर वेगा का वैल्यू 5 है, 11 नवंबर का वेगा वैल्यू इज 15। अब मैं मंथ एंड का लेके दिखाता हूँ। 25,700 का देखना है ना, क्योंकि सिमिलर डेल्टा देखने हैं हमको, सिमिलर स्ट्राइक लिया। अब अगर मैं मंथ एंड का देखता हूं, कैन यू ऑल नोटिस वेगा वैल्यूज क्लोजर टू एक्सपायरी, वेगा कम है, मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि भाई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। थोड़ा आगे जाते हैं इन एक्सपायरी टर्म्स, ठीक है, एज एज द टाइम इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी टू वेगा, मतलब मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ हैविंग अ हायर रेंज इंक्रीजेस। इसको इस तरह से आप विजुअलाइज करें। ये समझो मार्केट का मूवमेंट है। ओके, दिस इज 1 वीक रेंज, 1 डे रेंज, दिस इज 1 वीक रेंज। ओके, थर्ड वन इज 1 मंथ रेंज। करेक्ट? तो अगर मैं प्राइस स्केल डालूं इधर, इफ आई हैड टू पुट अप अ प्राइस स्केल, let's say this is 25,750. Okay, I will have, let's say 1,000 points. Okay, so 26,750 plus में 24,750 minus में, then you will have 500 points, right? So you will have 24,000, 25,250, and this will be 26,250, and the final one would be, let's say 100 points, 25,850, 25,650. This is your 1 week range, 1 day range. This is your 1 week. This is your
1 month. मतलब क्या है? What is Vega telling you? Vega value is you are trying to estimate the range of the market given the amount of time that is remaining in that counter. Are we clear? Yes or no? ठीक है, तो अभी अगर मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ये रेंज जो है फॉर द सेम टाइम पीरियड, इफ IB implied volatility is low, range expectation is low. If IB implied volatility is high, range expectation is also high. मतलब क्या है? In this area itself, okay, if the IB is high, अगर एक दिन का IB बढ़ जाता है मतलब मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज आ जाती है, रेंज आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है. IB is high. ठीक है, so IB implied volatility increases the range, stretches the range and narrows the range. So implied volatility has a direct impact on Vega. ठीक है, मतलब Vega basically tells you मार्केट की एक्सपेक्टेशन. मार्केट में आप और हम जैसे ट्रेडर्स हैं, अगर हमको पैनिक लग रहा है तो ये रेंज बढ़ता है. उसका प्रोसेस क्या होता है कि भाई ऑप्शंस बाइंग होती है, ऑप्शंस बाइंग के कारण इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है जिसके कारण रेंज बढ़ता है. मतलब वॉलेटाइल ज्यादा रह सकता है. ये वॉलेटाइल कब रह सकता है? भाई रिजल्ट्स आने वाले होते हैं कोई स्टॉक में जो F&O में है, या बजट के पास. भाई बजट के टाइम बहुत वाइल्ड मूवमेंट आता है मार्केट में, तो उस टाइम क्या है? रेंज बढ़ती है, IB बढ़ती है. ठीक है, और जब मार्केट नॉर्मल रहता है, मार्केट में कुछ ऐसा खबर नहीं, कोई अर्निंग सीजन नहीं, तो रेंज नैरो हो जाती है. ऑलराइट, सो अराउंड इवेंट्स implied volatility का या Vega ट्रेड्स कर सकते हैं. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन इन Vega, आप ऑप्शन बाई करोगे. एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एक बार ऑप्शंस वो Vega बढ़ जाता है, यू हैव एन एक्सपेंशन इन Vega एंड यू वांट टू देन टेक बेनिफिट ऑफ इट, आप क्या करोगे? आप उस टाइम ऑप्शन सेल करो, बिकॉज टाइम वैल्यू कंपोनेंट हैज इंक्रीज्ड एंड दैट contraction in Vega going forward will help. Are we clear with this? So these are the 4 main elements, delta, gamma, theta and Vega, जो आपके ऑप्शन प्रीमियम्स को अलग अलग प्रकार से इम्पैक्ट करते हैं. So whenever you want to trade options, especially if you are an options buyer, which a lot of us retail traders are, you need to be aware of the deltas, the time sensitivity, the gamma sensitivity. ठीक है, and only then buy the options. आप ऑप्शंस तब बाय करोगे जब आपको एक बहुत शार्प स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने की आशंका है. दैट मीन्स you will buy options only when you find or your technical analysis tells you that there is going to be a strong directional movement in the underlying. नहीं तो आप नहीं बाय करोगे. Are we clear? Option buyers will make money only when there is a very strong delta movement, very strong directional move. आपको अगर नीचे की तरफ दिख रहा है आप पुट खरीदो, ऊपर की तरफ दिख रहा है आप कॉल खरीदो. अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दोस कंप्रेशन जोन्स एंड ट्राई एंड टाइम इट. इसमें टाइमिंग बहुत क्रिटिकल होती है टू मेक मनी, टू ट्राई एंड टाइम दैट ब्रेकआउट. आर वी क्लियर? एंड इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, look for those spikes in option premiums. ठीक है, look for those spikes in Vega to sell them. तो आपका पैसा अच्छे से बन सकता है. Are we clear friends? I hope the session was interesting. एक short refresher course था on option Greeks, and I hope I've been able to explain to you a lot of factors like delta, theta, gamma, Vega and उनका impact क्या पड़ता है option premium पे. Okay? तो मैं अगले सेशन में भी वापस लेके आता हूँ कुछ नया इस तरह का टॉपिक जो आप लोगों को मदद करेगा इन योर ट्रेडिंग जर्नीज. Until such time, take care and trade safe. Have a clear understanding about your options and do subscribe to this channel for fresh updates. Take care. Bye bye.